Hello everyone, so today I'm going to share some tips and tricks for our beginners who are just starting out. So you need a henna cone. You can take any kind of cone you like. So right now I'm using natural henna cone by Henna Studio. So all I'm gonna do is remove the tip, the pin, and almost take out this much, almost this much henna out, so it will give you something to hold on. I already took some out, and then you're going to hold it like this. So see the angle how I'm holding it. So it's almost like over this much henna, and this much henna I'm going to hold in my hand like this. So this empty part, my thumb is going to reside over here, and then the rest of it is going to rest. So with this finger I am going to control it, and with thumb I'm going to press pressure onto it, and this is how we're going to work. And the main thing is that you always have to keep the henna cone pointed. You don't want to keep it slant, otherwise it can ruin your design. So always keep it pointed like this. So let's start. So you see I drawed some boxes over my sketchbook, or you can do it anywhere, and then we're going to make some basic flowers. So I'm going to start by a very simple flower. For this one you can do as many spirals as you want, and after that we're going to make some small humps. So I always divide my flower into 4 halves, so in this way it helps me get around it equal. And then for the next one, and then place a small dots. So you see I'm just applying pressure from my thumb, and then I'm controlling the motion of the tip through my finger. And then we're going to make some humps. So here's a basic flower, almost like a sunflower. And now for the part where we fill the petals. So you are just gently going to stroke it like this. So all that I'm doing here is take really small amount, put it over here, and just drag it.
not too much, or it will get dark and it won't look pretty. It's henna is almost like a sketching, so whatever we do, it's just some simple strokes and shading techniques, just the way they are in sketching. Now again, for the third flower, I'm going to start by making a spiral. And here, rather than round, we are almost gonna make petals, a paisley shaped petals. So it's like you make a line and then join it with a hump, like this. तो इस तरीके से हम ये फूल बनाते जाएंगे. एक बात का ख्याल रखना है कि हर पत्ती ऑलमोस्ट बराबर साइज़ की होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़रा सी छोटी बड़ी होगी तो फिर डिज़ाइन ख़राब हो सकता है. अब इसमें हम दूसरे तरीके से शेडिंग करेंगे. एंड या ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी जो टिप हो मेहंदी की हमेशा साफ़ हो. और अब तो यहाँ मैं बेस से बस ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स निकाल ली हूँ. मेहंदी को ऊपर की तरफ पुश करना है, बहुत ज़्यादा मेहंदी नहीं निकालनी है. Then for the third flower, again we're going to make a spiral, and then this time we're going to make M-shaped petals. Almost like an M. याद रखें मेहंदी के ऊपर आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के प्रेशर से ही निकालनी है. और मेक श्योर कि आपका हाथ का प्रेशर थ्रू आउट सेम रहे, वरना पेटल्स छोटी बड़ी हो सकती है. ये उस केसेस में होता है जब आपकी मेहंदी में थोड़ी सी एयर आ जाती है ना, तो थोड़ी सी रह जाती है, वो सेगमेंट्स टूट जाते हैं. अब इसको हम पूरा फिल कर देंगे, लेकिन वैसे ही लाइट जस्ट अप एंड डाउन मोशंस, ऊपर वाली आउटलाइन और नीचे वाली आउटलाइन को छूते हुए. मेक श्योर आपकी कोन की निप साफ हो. ज़्यादा लाइन में नहीं घुसाना है, वरना वो ख़राब हो जाती है.
नाउ फॉर द फिफ्थ फ्लावर, इसको टीयर ड्रॉप फ्लावर भी कहा जाता है या एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इसकी पेटल्स एक्सक्लेमेशन मार्क की शेप की होती हैं। इट्स यूजुअली यूज्ड इन अरबिक और गल्फ डिज़ाइंस। सो आपने एक मोटा सा डॉट निकाल के उसको नीचे की तरफ खींच देना है ऐसे। अगर ये आपसे ना हो सके तो आप सिंपली एक ऐसे करके स्केच करें और फिर इसको भर दीजिए। इस तरह है, बिल्कुल डॉट से भी ज्वाइन नहीं करना और मेक श्योर कि आपकी टिप बिल्कुल खड़ी टिप के साथ आप काम कर रहे हो। अगर तरह से भी लेटी भी होगी तो इस तरह टेढ़े पेढ़े हो सकती हैं। ओके, अब हम इस ही फूल की तरह का एक और फूल बनाएंगे। एंड नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगी कि ये जो बल्जिंग पार्ट है ना, इसको हम मोटा कर देंगे ऐसे। इस तरह सारी पेटल्स बराबर भी हो जाती हैं और फूल में खूबसूरती आ जाती है। अब हम एक बेसिक गर्ल फ्लावर बनाएंगे। तो इसको आप ऐसे पेटल बना के भी फिल कर सकते हैं, वरना एक साथ मोटे प्रेशर से निकाल के, तो प्रेशर कम करके
उसको एंटर ला के छोड़ दें। तो इस तरीके से भी आपकी पेटल बन सकती है। सो ऑल दैट आई डिड कि मैं कम प्रेशर से स्टार्ट करके मोटे प्रेशर से निकाल के बढ़ा के उसको ख़त्म कर देती हूँ। तो इस तरह वो पेटल बन जाती है। सी ये 3 हम पैटर्न है, ऑलमोस्ट लाइक अ रोज। अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। माशाल्लाह से आज का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। So by far we have made 8 flowers, and the next flower we are gonna make is a lotus flower, जिसको हम हिंदी में या उर्दू में कमल का फूल भी कहते हैं। और ये वाला जो मैं बता रही हूँ ये बहुत पुराने ज़माने का है। आई मीन इट्स प्रीटी ओल्ड एंड प्रीटी बेसिक। तो ये बहुत पुराना है, आजकल ये डिज़ाइंस में नहीं दिखता, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाया ऐसे नहीं हूँ ताकि यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम, क्योंकि ये कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, मतलब पुराने ज़माने की टेक्निक्स वगैरह जो आगे जाके नए डिज़ाइंस में एवोल्यूशन का सामान या सबब बनती हैं। ये हमारा फूल अब कंप्लीट हो चुका है। आई नो इट लुक्स अ बिट वॉन्की पर इट इज़ द वे इट इज़। और अब इसके अंदर जो फिलिंग करेंगे हम, बस ये मतलब जो इसका मेन पॉइंट जहाँ से पत्ती जॉइन हुई हुई है ना दूसरी पत्ती के साथ, तो बस उसके मेन पॉइंट पे हल्के 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 जिस तरह घास उगी हुई होती है गार्डन में, वैसी बारीक बारीक बिल्कुल छोटी छोटी फिलिंग या शेडिंग करेंगे। So due to some technical difficulties, my phone stopped filming and मैं कुछ फ्लावर्स को फिल्म नहीं कर पाई, बट इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको ये फ्लावर्स बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। So right now I am making a girl flower variation which I like to call a starfish. I know it sounds डम, बट इसकी शेप ऐसी है कि मुझे इसको देख के स्टारफिश याद आती है। तो फॉर द बेस ऑफ दिस फ्लावर हम वही गर्ल फ्लावर बनाएंगे जो हमने पहले सीखा था। अब हेयर इज़ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, जितना बड़ा आपका सेंटर होगा ना फूल का, उतनी ज़्यादा पेटल्स बना सकते हैं।
अब मैंने ये गर्ल फ्लावर का बेस बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं गुम्बद शेप की पत्तियाँ बना रही हूँ। गुम्बद कह लें इसको, या फिर तिकोन कह लें, या फिर पॉइंटेड पेटल्स कह लें, वट एवर यू लाइक, जो भी आपको याद करने में या आपको मतलब जो भी लफ्ज़ आपकी ज़बान पे आसानी से चढ़ जाए, आप उससे इसकी निशानदही कर सकते हैं। So what you're gonna do is you're going to sketch the pointed petals out, और स्केच बनाने के बाद अब आप इसको मोटा करेंगे ताकि ये खूबसूरत और मज़ीद इन्हांस लगे। So another variation that we are gonna do in the Gulf flower again is that अब हम इस गर्ल फ्लावर के ऊपर एम शेप की पेटल्स बनाएंगे, एम शेप या हार्ट शेप की पेटल्स, whatever you wanna call it. It's same as we made the previous flower. So there you go. We have completed our first whirl of flower. हमने पहला इसका पार्ट बना लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से ये पेटल्स बनाएंगे। मैं डायरेक्ट मोटा निकाल रही हूँ बिकॉज यू नो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर कंट्रोल, बट आप पहले खाली पत्तियाँ बना के उसके बाद उसका ब्रॉडर पार्ट मोटा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। So now for our next flower, it's a pretty basic flower. ये flower जो है हमारा जो सबसे पहला फूल जो आपको कोने में दिख रहा है on your left side, उसकी, और जो हमने स्पायरल शेप फ्लावर सेकंड रो का लास्ट फ्लावर जो था उसकी वेरिएशन है। और इट्स प्रीटी सिंपल। आई एम गोना शो यू। आपने इस तरीके से अपना जो पहला बेसिक फूल बनाया था वो बनाया, और उसके ऊपर इस तरीके से कंगूरे या स्पायरल्स हम बना के इस फूल को कंप्लीट कर देंगे। इट्स प्रीटी ईजी एंड प्रीटी कॉमनली सीन इन डिज़ाइंस नाउअडेज़। एंड देयर यू गो, योर फ्लावर इज़ कंप्लीट। ये अब तक हमने ये इतने सारे फ्लावर्स की प्रैक्टिस कर लिए, पूरे 3 रोज़ ऑफ फ्लावर्स। अब जो मैं आप लोगों को फूल बनाऊंगी ये ज़रा सा बेक है और थोड़ा सा बंच स्टाइल का फ्लावर है, एंड यू कैन यूज़ इट इन डिज़ाइंस। इट इज़ यूज फॉर वेरियस डिज़ाइंस एंड वेरियस एनहांसमेंट्स एंड वेरिएशंस। इसकी ये जो वेरिएशन है ये भी हमारे फर्स्ट फूल की वेरिएशन है, बट थोड़ी सी हटके है। सो वेट एंड वॉच। So I have started off this flower with a very basic base of a flower, and now I'm gonna make a whirl of small humps or petals. अब हमने जो है इसके गिट कंगूरों की एक लेयर देनी है। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई सेकेंड whirl, एंड आपने देखा कि मैंने बहुत बारीक कंगूरे की लाइन दी है, बहुत मोटी नहीं है और ना ही बहुत बारीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मीडियम, मतलब बारीक और मोटे के बीच का दरमियाना सा। So after completing my second whirl, I'm going to make the third whirl, and for the third whirl you are going to make your first flower, the basic flower that we learned, side by side each other and almost semicircles or half of the flower. अब इसके लिए मैंने हाफ फ्लावर बारीक बारीक साइड बाय साइड बनाते जाएंगे। कंगूरा बनाया, उसके ऊपर पेटल्स दी और इस तरीके से इसको बनाते चले जाएंगे।
Now the next flower we are gonna make is pretty simple, or it is a variation of the very first flower we did and the round petal flower we did. So the base model is same as our first flower, but at top of that, the second row of petals that we are gonna do is going to be a set of round petals. So for our second last flower, I'm again gonna start with a spiral center. So ये वाला जो फूल है हमारा, ये मिक्स है पेसले शेप petals का और round petals ka. Gosh, I said shade like shit. Lol. Sorry. So it's a mix. It's a mixture of round petals and paisley shape petals, but you're gonna make sure that the distancing is equal, so you get one by one of each petals, like one paisley shape petal, one round petal, like that. In the same way, you can do variation in the filling to like uh, do the shading from the bottom to top in one, and then in the other one do it from top to bottom. In that way you can differentiate the petals and it kind of look cool. Last but not least, so for our last flower, it's a variation of Gulf style flower, and I call it a miniature Gulf rose because it's pretty common. ये जो आपने petals का whorl बनाया है, you're just gonna repeat the first whorl again and again for a fully bloomed rose, and you can differentiate it in giving it more texture and style. So guys, today we practiced 16 kind of flowers total, and here is the close-up. These are pretty easy and you can use them in your designs, and they're gonna look pretty cool and you're going to love them. They're pretty easy. इसको आप हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करें और क्या कहते हैं पेंसिल से बना के भी अपनी स्केच में रख लें, जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं. So I have many more, like you can see. मेरे पास ये भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं. अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मेहंदी आर्ट के ग्रुप पे ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है. दीज आर सम काइंड ऑफ फ्लावर शेप्स दिस विल हेल्प यू. तो दिस इज़ वन एंड देन दिस इज़ द वन. एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई. थैंक यू सो मच.